अभी वो देखो जरा होगा। Yeah. So very good morning. I hope my voice is audible, right? I think it's audible, but I want a confirmation from your side as well. So please let me know in the live chat. So Dushyant Yadav has written Radhe Radhe Jai Shri Krishna. So very good morning, Dushyant. आवाज आ रहा है मेरा सभी को? All the viewers, I request please put it in the live chat. Of course, I might be audible because everything here looks fine, but I also wanted a confirmation from your side. Okay, okay. Is the screen visible? Yeah, good. We had one chat from Gurpreet. Yeah, thanks for that confirmation. Gurpreet, am I audible? Is the screen visible? Please confirm. Okay. So, how is everything going? How the trading is happening? How the markets are doing? Anybody, any idea? Are you making profits? Are you making losses? So, just a general talk before starting with the session, right? What's your view about the current market situation? Anything if you want to share. Yes, Gurpreet, tell me. So there are approximately few participants who are joining right now. So you can let me know. See, before starting with the session, what I usually do is let's introduce who I am. So I'm Ayushman Datta from SBI Cap Securities, and I'll be conducting this today's webinar on SSL SBI Cap Securities Ki Paathshala. So what is the agenda? Now, when I talk about any session, I basically start with the agenda. Now, when I talk about agendas, today our major agenda is to understand the trading platform of SBI Cap Securities. Now, when I'm talking about the trading platform, mostly the mobile application. That is something that we are going to understand in the today's session. ठीक है. तो आप शायद स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो. सो आई यूज ए मिक्स ऑफ बोथ द लैंग्वेज बिकॉज आई यूजुअली गेट रिव्यूज दैट आप हिंदी भी यूज करो, इंग्लिश भी यूज करो. So whenever you open this application, you will see something called as the explore section, right? As of now, हमारा जो landing page है, it is watch list, but very soon it will become the explore section. तो explore में क्या है? If you see on the top, so there are certain indices that जैसे कि निफ्टी 50 दिया गया है, बैंक निफ्टी दिया गया है, all the indices have been given here. So you can see the rates of those indices, and you click on this and you can see other indices which you can add, pin or unpin. So all these features are available here. Okay. And now if you scroll down, if you see there is something called as explore. Now in explore, you will see which way will the index go up, right? So there is a unique thing that that I can show you. So for example, I am having a view on Nifty 50. ओके. सो जैसे मैं निफ्टी 50 पे क्लिक करता हूं, तो whether the market is going to go up, if the nifty 50 is going to go up or is it going to go down. So I'm selecting going up. जैसे मैंने going up पे क्लिक किया, so what I'm getting is I'm getting some tailored made option contracts. ठीक है. तो ये जो है आपको tailored made option contracts मिल जाते हैं based on the view that you have ऑन दैट पर्टिकुलर इंडाइसेस. तो जो आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स मिलता है उसमें रिस्क भी मेंशन रहता है कि वेदर ईच कॉन्ट्रैक्ट इज अ मीडियम रिस्क. इफ यू सी द सेकंड कॉल, इट इज हैविंग अ हाई रिस्क, राइट? So again, you can have a view. You can click on your view and you can try out this tailored made option contracts. Okay, तो ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है that is nothing but options arena. सिमिलरली मैं दूसरे इंडेक्स के लिए भी कर सकता हूँ. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बैंक एक्स, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी, व्हाट इज माय व्यू ऑन बैंक निफ्टी? सो फॉर एग्जांपल मेरा व्यू है कि इट इज गोइंग टू गो डाउन, सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दैट बटन. तो जैसे मैंने बियरिश बटन पे क्लिक किया है, इट विल गिव मी सम टेलर्ड मेड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स if I'm having a bearish view. Okay, so that is a very unique thing that you can check it out in this mobile application. Now, if you see, there is one bank nifty call which is given as 57,200 strike price. It's a put option. Now, if I click on the details, I can get the details, right? And I can directly click on the buy button. I can see the spot price, I can see the break even, everything in one single screen. सारे चीजें एक ही स्क्रीन में आपको दिया जाता है. तो मैं सिंपली बाय करूंगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट बाय हो जाएगा. आई कैन ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज द क्वांटिटी फ्रॉम हियर एज वेल.
ओके, तो एक बेसिक चीज आपको समझ में आता है व्हेन आई टॉक अबाउट दिस फीचर ऑफ एक्सप्लोर. Now if you scroll down you will see something called as most brought with us. Now what does this section tells us about? So this is nothing but हमारे जितने भी clients हैं उन्होंने कौन से shares सबसे ज्यादा खरीदे हैं, that is nothing but most bought with us. So if you see JPP Power, you have Jaman Auto, you have Geo Financial Services, Yes Bank. अगर आपको ये पूरा लिस्ट देखना है तो you can click on this view all button on the top right hand corner and you get this entire list of shares which has been purchased mostly with us. तो अगर आप देखोगे ये पूरा लिस्ट आपके सामने आ जाता है. You can click on the back button on the top left hand corner. Then again, if you scroll down, you have something called as a recommendation section. Now in the recommendation section, इसमें क्या है, आपके सारे research ideas दिए रहता है, trading ideas, which is backed by our in-house research team. Now for the first time in the industry, what we have done is normally जब भी आप रिसर्च आइडियाज देखते हो तो क्या होता है कि सारे रिसर्च आइडियाज एक जगह रहता है, आपको बाई करना है, सेल करना है, दैट इज व्हाट दे टॉक अबाउट. बट हियर वी हैव क्रिएटेड समथिंग कॉल्ड एज ए फिल्टर बेस्ड रिकमेंडेशन, or you can say price filter based recommendation. देखो, we understand that there are various types of people in the markets. अभी सब लोग का risk appetite अलग होता है. Everybody cannot purchase a share of 800 rupees, 900 rupees. So depending upon the price, you can filter out the recommendations. So for example, अगर मुझे कोई भी ऐसा recommendation चाहिए, कोई ऐसा शेयर खरीदना है जो 100 से लेकर 250 के बीच में है, so I'll select this button, 100 to 250. So it will show me all the trading ideas for those stocks which are between this price range, that is between 100 to 250. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो टाटा स्टील एक है, एक सीएससी है विच इज पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. देन यू हैव एमओएल. देन अगेन इफ आई वांट समथिंग कॉल्ड एज एनी स्टॉक विच इज अबव 500 रुपीज, सो आई कैन सिलेक्ट दैट. तो इधर व्यू ऑल का भी बटन दिया गया है. वंस आई क्लिक ऑन दिस व्यू ऑल बटन तो ये क्या हो जाएगा, पूरा रिसर्च, जो आपका रिसर्च आइडियाज है, ये सब कुछ एक ही पेज में आपके सामने दिख जाएगा. सो दीज आर ऑल द इक्विटी आइडियाज. What are the equity trading ideas? These are the delivery trading ideas. These are the momentum trading ideas, right? So that is something that we are going to talk about. Then we also have a e-margin trading idea. E-margin थोड़ा हम लोग इसके बारे में बात करेंगे थोड़े टाइम बाद. Right? It's a leverage trading facility. Okay. So then you have intraday trading ideas. So we have our own in-house research team and they develop these trading ideas for all our clients. Okay. Now the most important part of our research recommendation is it. देखो, रिसर्च आइडियाज तो बहुत लोग देते हैं, बट व्हाट आई फील गुड अबाउट दिस एसबीआई कैप सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इज दे ऑल्सो गिव ट्रेडिंग आइडियाज ऑन प्रोडक्ट्स लाइक ई मार्जिन, right? See, e-margin, as of now, I'm just giving an overview. It's a leverage-based trading facility, right? इंडस्ट्री में इसको MTF बोलते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी बोलते हैं इंडस्ट्री में. इट्स leverage-based trading facility. Now, normally, all the competitors out there, all the broking houses out there, they will give you this e-margin trading facility. Everybody gives it, but we are providing something beneficial in it. That is something that we can discuss later on. But the major thing is we are also giving research ideas on e-margin positions. देखो, कभी भी अगर आप लेवरेज लेते हो तो लेवरेज लेके ट्रेड करते हो या लेवरेज लेके कोई चीज खरीदते हो, यू शुड बी वेरी श्योर शॉट कि शायद वो स्टॉक का ये मूवमेंट हो सकता है. So then only you will take the leverage. So in SBI Cap Securities, if somebody wants to take an e-margin position, अगर उसके पास funds कम है, leverage लेके काम करना है, so our research team also give focused recommendations only on e-margin stocks. तो ये भी आपको इधर मिल जाता है. Then you can also see we also have derivative trading ideas, right? फिलहाल तो कुछ नहीं है, but we also have derivative trading ideas which is given here. Then if you see something called as explore your favorite, तो आप सेक्टर वाइज भी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो. सो फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर, तो इसमें अगर मैंने सिर्फ व्यू ऑल पे क्लिक किया, सो बैंकिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, राइट? सो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर आई कैन फिल्टर आउट द स्टॉक्स एंड आई कैन टेक ए पोजीशन ऑन दोस काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स. नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन अराइजेस इज अगर मुझे इस स्टॉक्स पे काम करना है, क्या इसमें मैं फिल्टर्स डाल सकता हूँ? यस, मैं डाल सकता हूँ. So if you see on the top right hand corner, there is something called as sort and filter. Okay, तो इधर मैं filtration कर सकता हूँ based on the last traded price. If I want from highest to lowest or lowest to highest, वॉल्यूम के बेसिस पे मैं कर सकता हूँ, किसका ज्यादा वॉल्यूम है, किसका कम वॉल्यूम है.
राइट? सो इफ आई जस्ट क्लिक ऑन एनी वन ऑफ दिस फिल्टर्स एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइस, तो मुझे वही स्टॉक्स खरीदना है, वो भी एफएमसीजी में, जो 250 से लेकर 500 के बीच में. सो आई यूज इट एंड आई क्लिक ऑन अप्लाई. So it will only filter out those stocks from that particular sector which is meeting that my filtration criteria. So it becomes a kind of a very you can say unique feature which is helpful for investors or traders to take decisions quickly and directly enter into the markets. ठीक है? तो अगर आपको ई मार्जिन लेना है, अगर आपके पास फंड्स कम है, अगर आपको एमटीएफ या ई मार्जिन का ट्रेड्स लेने हैं, तो कैसे पता चलेगा कि कौन से ट्रेड्स ई मार्जिन में अवेलेबल है? सो आई कैन ऑलवेज क्लियर दिस फिल्टर. So if you see there is something called as explore e margin. थोड़ा अगर आप देखोगे टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, यू विल सी समथिंग कॉल्ड एज एक्सप्लोर ई मार्जिन. जैसे आप एक्सप्लोर ई मार्जिन पे क्लिक करोगे, यू विल सी ऑल द स्टॉक्स जिस पे ई मार्जिन फैसिलिटी अवेलेबल है एज पर द आरएमएस गाइडलाइंस. ओके, सो अभी आप देखोगे इधर अप टू 4x लिखा गया है. सो दीज आर ऑल द स्टॉक्स वेयर वी हैव ई मार्जिन अवेलेबल. ठीक है? देन यू हैव सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज, कैपिटल गुड्स, फाइनेंस. सो इसमें भी सारे स्टॉक्स, मतलब ये जितने भी स्टॉक्स है फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, ई मार्जिन इज अवेलेबल. सो इफ आई जस्ट अनसिलेक्ट दिस, देन यू विल गेट द होल लिस्ट. So it will also show you the stocks which is there with e margin and which is not there with e margin. So that is something that we see here. Now, if you scroll down, you will see there is a very unique concept that we have created. We have created theme-based baskets. Now, what does that mean? Now, before explaining this thing, let me give you an overview. Generally, what happens, I think from the past few years, I have been seeing in this industry, people actually work on portfolio-based approach while dealing into stocks. जब कोई स्टॉक खरीदता है तो लोग पोर्टफोलियो के बारे में सोचते हैं, डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचते हैं कि मैं एक स्टॉक नहीं खरीदूंगा, 10-12 स्टॉक खरीदूंगा, एक पोर्टफोलियो बनाऊंगा, डाइवर्सिफाई करूंगा. बट व्हेन इट कम्स टू म्यूचुअल फंड्स, people are very conservative in India, so they will purchase only 1 or 2 or 3 mutual funds और उसको ही लाइफ टाइम चलाएंगे. But times have changed. You need to understand, nowadays people are preferring portfolio based mutual fund investing. So they want a basket of mutual funds where they can invest based on certain theme. ओके, तो इधर मैंने कुछ यूनिक थीम्स हम लोग ने बना के रखा है. सो इफ यू सी, इफ यू वांट टू अचीव योर ड्रीम आईफोन, राइट, सो दीज आर द बास्केट्स दैट यू कैन इन्वेस्ट इनटू. सो दीज आर नथिंग बट योर इन्वेस्टमेंट बास्केट्स. तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें से कोई भी एक बास्केट ले लेता हूँ. आई एम टेकिंग समथिंग कॉल्ड एज यंग गन्स. सो इफ आई क्लिक ऑन इन्वेस्ट नाउ, इट विल शो द, इट विल ओपन दैट बास्केट एंड इट विल शो यू कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है. नाउ व्हाट डज दिस बास्केट रिप्रेजेंट्स ऑफ? सो ये बास्केट में आप 5,000 का एसआईपी कर सकते हो. अगर आपको लमसम करना है तो आपको मिनिमम 25,000 का करना है, राइट? नाउ इफ यू स्क्रॉल डाउन, इट विल शो यू द परफॉर्मेंस ऑफ द बास्केट विद द बेंचमार्क. ठीक है? नाउ अगेन इफ यू स्क्रॉल डाउन, यू विल सी समथिंग कॉल्ड एज ए वेरी बेसिक कैलकुलेटर, जहां पे आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट डाल के यू कैन कैलकुलेट इंडिकेटिव रिटर्न्स इफ यू वांट टू डू इट. And again, if you scroll down, this is the constituents of this particular basket. अभी आप इसको ध्यान से देखोगे, ये क्या है? ये सारे म्यूचुअल फंड्स है. तो 5-6 म्यूचुअल फंड्स को लेके एक बास्केट बनाया गया है, राइट? Now if you see, Bandhan Small Cap Fund has 24% of exposure in this basket, right? Edelweiss is having 24%. HSBC Small Cap Fund is having 28%. तो सारे बास्केट्स, मतलब सारे म्यूचुअल फंड्स को लेके एक इन्वेस्टमेंट बास्केट बनाया गया है. नाउ इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द रिटर्न्स ऑफ द बास्केट, जनरली आप क्या करोगे? हर एक म्यूचुअल फंड का रिटर्न देखोगे. बट नो, व्हाट वी आर डूइंग राइट हियर इज वी आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन दिस बास्केट. बास्केट में मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स है. इफ आई वांट टू सी द परफॉर्मेंस ऑफ दिस, आई कैन सिंपली यूज दिस ईयर वाइज फिल्टर विच इज गिवन. जैसे कि 1 ईयर का चाहिए, 3 ईयर का चाहिए, 5 years का चाहिए. सो इफ यू सी द 5 years, द पैक रिटर्न इज अराउंड 36.67%. 5 साल का ये रिटर्न है, राइट? नाउ द वेरी सिंपल प्रोसेस दैट आई कैन डू इज आई कैन क्लिक ऑन स्टार्ट SIP. I can click on invest one time. So if I'm clicking on start SIP, I just have to select my monthly amount, कितना मुझे करना है, and I can create a mandate. तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता है. You have a theme, you want to purchase your dream iPhone, you just go into this basket, you start an SIP, 5,000 rupees SIP is the minimum, and आपका जो SIP amount है 5,000, it will get equally divided or will be divided as per the थीम ऑफ द बास्केट, कि कौन से म्यूचुअल फंड में कितना करना है. तो आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड्स खरीदने की जरूरत नहीं है. विथ वन क्लिक यू आर एबल टू परचेज 5 to 6 म्यूचुअल फंड्स, व्हिच मींस यू आर गेटिंग ए basket of mutual funds. So we have created this basket called as young guns.
So there are many other theme based baskets which you can explore. So if you see पोस्ट रिटायरमेंट के लिए अगर आपको कुछ करना है, तो इफ यू क्लिक ऑन पोस्ट रिटायरमेंट, so that is a very unique basket which has been created by our team, that is called as ready at 60. So this is a unique basket which consists of 1 2 3 4 म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, और अलग अलग म्यूचुअल फंड्स का अलग अलग एक्सपोजर है. सो यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी विद जस्ट वन क्लिक बाय इन्वेस्टिंग इन बास्केट्स, जहां पे आपको एक म्यूचुअल फंड नहीं, मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स का आपको exposure मिलता है. Then again, if you scroll down, you will see something called as initial public offering. That is something that you can look after. Okay, कौन से IPOs चल रहे हैं, कौन से IPOs अभी अपकमिंग है, राइट, रिसेंटली लिस्टेड IPOs कौन से है, वो भी आपको दिख जाएगा. You can see those things as well. Now, when I talk about SBI Cap Securities, we are just not a stockbroker. Please try to understand. We are a financial service powerhouse, so we have multiple product offerings with us. Okay, so if you see, there are other investment opportunities like NPS, corporate fixed deposits, ETFs, so you can start your investment journey through this as well. Okay, तो इस पे मैं for example I am selecting corporate FDs, right? So once I click on corporate FDs, so it will show all the corporate FDs which is available with us, right? So if you want to diversify your money, so if you have your exposure in the equity markets and you also are planning to invest in fixed income, right? Majority, if you see, most of the brokers right now doesn't have a dedicated fixed income. So हमारे पास fixed income products भी available है. You can start your corporate FD with any one of these corporate FD providers if you wish to. देन ETFs के लिए हम लोग ने एक अलग सेक्शन बना के रखा है. जनरली people find it difficult while they want to purchase ETFs. So what we have done is, if you click on ETFs, there is a total different section of ETFs जो आप परचेज कर सकते हो. जैसे कि इसमें ग्लोबल ETFs है, इसमें डेट बेस्ड ETFs है, इसमें कमोडिटी ETFs है. ये सारी ETFs आप खरीद सकते हो. So that is a unique feature that you can see. Then you can see something called as the learning videos. So this is a very unique kind of a section that we have created. This is basically a dashboard. Explore section is nothing but what? It is a dashboard. राइट, रिकमेंडेशंस में मैं आपको और भी कुछ दिखाना चाहूंगा. राइट, इफ यू क्लिक ऑन व्यू ऑल, these are all the recommendations. You can also check our research reports. So if you click on research reports, you can get access to those research reports in one single click, right? You can also get IPO based IPO notes and all those things are there. तो मुझे कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है. अगर मैं कोई भी रिसर्च आइडिया को देख रहा, आई कैन सिंपली क्लिक ऑन बाई एंड आपका इधर से बाई हो जाएगा, राइट. आई विल ऑल्सो गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग कि आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, हाउ द ट्रेडिंग विंडो लुक्स लाइक. सो डोंट वरी, उसका भी एक व्यू मैं दे दूंगा. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम क्लिकिंग ऑन द बाई बटन, दिस इज हाउ द ट्रेडिंग विंडो लुक्स लाइक. तो मैंने रिसर्च आइडियाज में गया, राइट, and I have gone to Jamna Auto and have just clicked on buy. So the buy window gets opened in front of me. So if you see, I can trade on delivery. Delivery का मतलब क्या होता है? I can buy it today, I can sell it anytime, either tomorrow, either after next day, or after few weeks, or after few years. So I can put the quantity. By default, if you see, it is a market order. Market order का मतलब क्या है? अगर आप इधर देखोगे, so market price is getting selected. ठीक है, तो आप बाई पे क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा? आपका जो भी अवेलेबल मार्केट प्राइस है जामना ऑटो का, वो उसके हिसाब से वो परचेज हो जाएगा ना. इफ आई वांट टू प्लेस ए लिमिट ऑर्डर, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्डर. लिमिट ऑर्डर मतलब इफ आई वांट टू प्लेस एन ऑर्डर ऑन माय ओन प्राइस. सो जामना ऑटो इज ट्रेडिंग एट around 94 rupees. Now I want to purchase it at 90 rupees, 90.78. So what I can do is I'll unselect this market price and I'll simply put 90.78. ठीक है. Now if I click on the more button, तो by default जो validity रहेगा वो किसका रहेगा? Day का validity रहेगा. कितना? By default day. Day का मतलब क्या होता है? It will search for the entire day कि whether I'm getting this stock at 90.78 or not. ठीक है. अगर वो एंटायर डे का मतलब क्या होता है? दैट इज ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स बिटवीन 9:15 to 3:30. अगर उस टाइम पे मुझे ये स्टॉक मिल रहा है 90.78 के बीच में, तो वो परचेस कर लेगा, और एल्स आफ्टर द मार्केट आवर्स इट विल कैंसिल द ऑर्डर. ठीक है. सो दैट इज व्हाट वी सी हियर. So
I can use day, I can use IOC. IOC is nothing but immediate order cancel, where I can just purchase something and अगर वो price तुरंत मुझे नहीं मिलता, if I am not getting the price for 90.78, it will get cancelled, right? So that is nothing but IOC, immediate order cancel. Then you have something called as GDD. Now those who don't know, GDD का मतलब होता है good till date. पहले तो बहुत सारे आते थे, पहले गुड GTC आता था एक टाइम पे, गुड टिल कैंसलेशन, राइट? अभी सिर्फ वी आर ऑन, सो एज ऑफ नाउ मल्टीपल ब्रोकर्स आर ओनली प्रोवाइडिंग GDD, गुड टिल डेट. तो इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप डेट सिलेक्ट करते हो. जैसे कि मैंने 16 तारीख का रखा है, तो इफ आई क्लिक ऑन द ओके बटन एंड इफ आई जस्ट क्लिक ऑन बाय, ये 16 तारीख तक ढूंढता रहेगा, 16 जुलाई तक, कि मुझे ये स्टॉक 90.78 में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. तो कब ढूंढेगा? 16 जुलाई तक ढूंढेगा, एवरी डे ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स. अगर 16 जुलाई 3:30 तक अगर आपको ये प्राइस नहीं मिला, सो इट विल कैंसिल द ऑर्डर. ओके, सो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज गुड टिल डेट. आई होप दिस इज क्लियर. Then again, you can use other features like something called as intraday. So if you want to place an intraday trade, आज खरीदना है आज ही बेचना है, you can do it. E margin भी अगर आप कर सकते हो. Now E margin is a very unique product of SBI Cap Securities, right? Now what is E margin? I'll just give you a very basic overview. I'm not going too detail in E margin today. So for example, you want to purchase 100 shares and each share is costing 400 rupees. How much money do you need? Can anybody tell me in the live chat? 100 शेयर्स खरीदना है मुझे, मैं हिंदी में बताता हूँ आप लोग को, और एक शेयर का कीमत है 400 रुपया. तो मुझे कितना पैसों की जरूरत पड़ेगा? एनीवन? आशीष, गुरप्रीत, श्रीधर, संजय, वीरल, एनीवन? So you do a very simple calculation. 100 शेयर्स, 400 का एक शेयर, यू नीड 40,000 टू बी ऑनेस्ट. ओके, आपको 40,000 रुपया की जरूरत है. वेरी गुड. मखदूम हैज गिवन द आंसर. मखदूम Muhiduddin, right? So even Sayyed has given that answer. So we have something called as 40,000. So 40,000 मान लो मेरे पास नहीं है, I have less funds. ठीक है, मेरे पास जो है फंड्स जो है वो बहुत कम है. तो at that time what should I do? So I only have two options. One is I wait for my funds, कि जब तक फंड्स आएगा तब तक मैं पोजीशन खड़ा ही नहीं करूंगा, या फिर I won't take the trade. In both these situations I am missing the opportunities and you all know that market किसी के लिए नहीं रुकता. ठीक है? So what I can do is I can use this E margin feature. Now what is this E margin? E margin lets you trade even if you have less funds. तो अगर आपको कोई पोजीशन लेना है बट आपके पास फंड्स कम है, तो आपको ई मार्जिन हेल्प करेगा. नाउ इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टॉक्स, बट लेट्स अज्यूम दैट फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, 100 शेयर्स, एक शेयर का प्राइस 400 है. द RMS टेल्स यू दैट 25% दो, बाकी हम लोग फंड करेंगे. सो द इनिशियल मार्जिन इज हाउ मच? 25%. ठीक है, तो आप 40,000 का सिर्फ 25% दोगे. 40,000 का 25% कितना होता है? Anyone, any idea? It's 10,000 rupees to be honest. तो 10,000 रुपया डाल के, सो इफ आई जस्ट क्लिक ऑन ई मार्जिन, सो मैं 10,000 रुपया डाल के 40,000 का ट्रेड ले रहा हूँ. मतलब 30,000 इज बिन प्रोवाइडेड एज ए ई मार्जिन प्रोडक्ट बाय SBI कैप सिक्योरिटीज. मतलब वो उसको फंड कर रहे हैं. नाउ ये आप पूछोगे कि आयुष्मान जी ये तो सब करते हैं, आप लोग यूनिक क्या कर रहे हो? Every stock broker out there is doing it, be it an online broker or a discount broker, everybody is doing it. But please understand, it's a leverage trading facility. We are giving you that 30,000. So every broker also charge interest. We also charge interest. I'm not saying that we are not charging interest. But 95% or more than 70 to 80% of the stockbrokers out there, they will charge you interest on T plus 1 day. अगर आज पोजीशन लिया तो कल से आपका पर डे बेसिस में इंटरेस्ट चालू हो जाता है, राइट? सम ब्रोकर्स चार्ज यू T plus 2 days. But in SBI Cap Securities, we won't charge any interest for T plus 23 trading days. मतलब approximately up to 1 month हम कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते हैं. उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. ठीक है. नाउ इसमें भी अगर आप बोलोगे कि पर एनम इंटरेस्ट रेट कितना है, इफ यू टॉक अबाउट द इंडस्ट्री, द पर एनम इंटरेस्ट रेट्स इन द ब्रोकिंग इंडस्ट्री इज फ्रॉम 18% to 25%, राइट? कुछ कुछ जगह पे 15% भी चार्ज करता है, 16% भी चार्ज करते हैं पर एनम.
So we are not charging interest for the first T plus 23 trading days. After that, we are charging interest of 0.04 परसेंटेज पर डे. ठीक है. तो अगर आप 0.04 परसेंटेज पर डे के बारे में बात करते हो तो सालाना कितना हुआ हमारा. ओके. तो यू जस्ट डू 0.04 into 365. It is 14.6 percentage. That is our interest rates in yearly basis. ठीक है. तो ये जो है 14.6 परसेंटेज आपका ईयरली एनुअल इंटरेस्ट रेट है. सो विच इज लेस देन द इंडस्ट्री एवरेज. द इंडस्ट्री एवरेज स्टार्ट्स फ्रॉम 18 और 15 to 16 percentage to 25 percentage. So we are also charging less than the industry average when it comes to interest, and we are also not charging interest for approximately first T plus 23 trading day. So that is the uniqueness of the e-margin feature which is provided by SBI Cap Securities. The second thing that I already discussed, अगर आप लोग को याद रहेगा कि e-margin में भी हम लोग रिसर्च आइडियाज देते हैं, ट्रेडिंग आइडियाज देते हैं. राइट. ऑफ कोर्स आप एक लेवरेज लेके आप परचेस कर रहे हो, सौदा कर रहे हो मार्केट में, तो वी आर ऑल्सो गिविंग यू ट्रेडिंग आइडिया. सो दीज आर ऑल द सपोर्ट दैट यू गेट with SBI Cap Securities if you start trading or investing with SBI Cap Securities. That is the support that you get. Now, apart from that, you can also do a cover order. तो ई मार्जिन में आपको थोड़ा बता देता हूँ कि मुझे अगर एक क्वांटिटी खरीदना है तो आई कैन डू इट विद ई मार्जिन, राइट. एंड मुझे ज़्यादा क्वांटिटीज भी खरीद सकता हूँ मैं ई मार्जिन में. देन यू ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज कवर ऑर्डर. व्हाट इज कवर ऑर्डर? सो आई जस्ट एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट. कवर ऑर्डर इज नथिंग बट व्हेन यू हैव मल्टीपल ऑर्डर्स इन अ सिंगल ट्रेडिंग विंडो, दैट इज कॉल्ड एज कवर ऑर्डर. कुछ लोग इसको ब्रैकेट ऑर्डर भी बोलते हैं. सम पीपल आल्सो कॉल इट एज अ काइंड ऑफ ए ब्रैकेट ऑर्डर और अ सेमी ब्रैकेट ऑर्डर. सो व्हाट डज इट मींस कि एक है मेरा मार्केट प्राइस में परचेज होगा, तो आप देख रहे हो कि मार्केट प्राइस पे ये लॉक्ड है. दूसरा, बेस्ड ऑन माई रिस्क मैं इसमें स्टॉप लॉस डाल सकता हूँ. सो फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग ए रिस्क ऑफ 14 rupees, let's assume. So I can put a stop loss at 80. That can be my trigger price. Okay. एंड उसके बेसिस पे एक लिमिट प्राइस आ जाएगा. आई कैन ऑल्सो पुट माई ओन लिमिट प्राइस इफ आई वॉन्ट टू एडिट इट. सो व्हाट हैपेंस इन दिस सिंगल विंडो, आई एम पुटिंग 3 ऑर्डर्स. इफ यू हैव नोटिस्ड इट, मैं 3 ऑर्डर डाल रहा हूँ एक सिंगल विंडो में. एक है मार्केट प्राइस में मैं बाई कर रहा हूँ, जैसे कि मार्केट प्राइस टिक किया हुआ है. दूसरा मैं स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस डाल रहा हूँ, और तीसरा मैं स्टॉप लॉस का लिमिट प्राइस भी डाल रहा हूँ. ओके. सो इसका मतलब ये होता है कि अगर शेयर ऊपर गया तो कोई इशू नहीं है, शेयर नीचे आता है when it goes nearby 80, it will start squaring off your position. So that is your trigger price. Your order gets triggered during that price. Now the question arises is, तो हम लोग लिमिट प्राइस क्यों डालते हैं? What is the need of a limit price if I'm putting a trigger price at 80? Why do I need a 78.40 limit price? The reason behind that is sometimes the markets are very volatile. Okay, so along with the trigger price we also put a limit price. तो इससे क्या होता है, अगर उस पर ट्रिगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो 80 या 78 के बीच में ये स्क्वायर ऑफ हो जाएगा. मोस्टली एज पर माय एक्सपीरियंस, मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स गेट्स ट्रिगर्ड एट द ट्रिगर प्राइस इटसेल्फ, राइट. So that is one thing that you can look into. So these are all the, this is how the trading window of SBI Cap Securities looks like. Now if you see, this is explode. अभी आप stocks पे जाओगे, this is how the stock explode looks like. It will show you the profit and loss. So this is my portfolio, I think so. So it is showing the profit and loss right here. Then the trending stocks, again recommendations. Then you also get market movers. Market movers का मतलब क्या होता है कि which are the top gainers, which are the top losers, 52-week high, 52-week low, ये सारे चीज आपको मिल जाता है. Now there is a very unique feature that we have launched in our recent updates, that is nothing but the heat map. Okay, so if you click on view heat map, you can see the heat map. Now what is a heat map? Anybody has any idea? You can put it in the live chat as well. Right, let's make this session a very interactive session. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं से बात कर रहा हूँ आप लोग सिर्फ सुन रहे हैं. So please also put it in the live chat if needed. So heat map ये होता है कि मान लो मैं कोई इंडेक्स देख रहा हूँ. So इंडेक्स तो ग्रुप ऑफ स्टॉक से बनता है, बराबर. अभी अगर इंडेक्स आपका ग्रुप ऑफ स्टॉक से बनता है तो वो ग्रुप ऑफ स्टॉक से इंडेक्स को या तो ऊपर लेके जाएगा या तो नीचे लेके जाएगा. दैट इज एज सिंपल एज दैट. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इज, सेंसेक्स में कौन से स्टॉक्स है जो पॉजिटिव में, जो सेंसेक्स को ऊपर ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं. सो इफ यू सी BEL, रिलायंस, दीज आर ऑल पॉजिटिव.
एंड दीज आर द स्टॉक्स विच आर न्यूट्रल, जैसे कि अदानी पोर्ट्स इज न्यूट्रल, बट जो रेड में दिख रहा है, दीज आर द स्टॉक्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द सेंसेक्स डाउन. ओके. उसके बाद निफ्टी 50 का हिट मैप आप देख पा रहे हो. दिस इज द हिट मैप. देन यू हैव बैंक निफ्टी. Okay, and you also have other indexes as well. So that is something that you see, the benefit that you see in heat map. Then you also have e margin trading ideas. अब ये सवाल लोगों के मन में आता है कि अगर मुझे ई मार्जिन में ट्रेड करना है तो सारे स्टॉक्स तो ई मार्जिन में अवेलेबल नहीं होते, टू बी ऑनेस्ट. सो इफ आई क्लिक ऑन व्यू ऑल, इट विल शो ऑल द स्टॉक्स इन विच ई मार्जिन इज अवेलेबल, और जिसपे अप टू 4x मार्जिन अवेलेबल है. अप टू 4x का मतलब क्या होता है? सेम एग्जाम्पल, मैंने 40,000 का शेयर लेना है, मेरे पास 40,000 नहीं है, आई एम ओनली पेइंग 25%, मतलब 10,000 लेके मैं 40,000 का शेयर ले रहा हूँ. दैट इज नथिंग बट अप टू 4x. ओके. Then again, if you scroll down, you will see something called as IPOs. Those are also given here. Then you also have something called as small case buyback. Now, what is a small case? Small case is a very big product in itself, right? I don't know whether I'm able to complete the entire small case, but I'll just give you an overview of small case. Now, if you're a beginner in the markets and if you want to start your investment journey, you can start with something called as small case. Small case kya hai? I'll just click on this. Small case is a unique way of trading or investing. Now, what is the unique way? Again, it's a basket based investment methodology. Now, you have some ready made baskets which are created by fund managers out there from various research or advisory firms. You can invest in those baskets. या तो आप लमसम इन्वेस्ट करो या तो आप SIP करो उस बास्केट पे. ठीक है, मैंने भी खुद कुछ करके रखा है, जैसे कि आप देख रहे हो. आई हैव परचेज सम baskets. Okay, so if I click on this basket, what happens is, so this baskets consist of shares as well as ETFs. basket क्या है? एक डिब्बा है, उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर्स और ETFs है. इसके पहले वाला जो मैंने बास्केट्स बताया था, दैट वाज अ म्यूचुअल फंड बास्केट. इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट पैक्स बोलते हैं. ये जो है, ये स्मॉल केस बास्केट्स है. इसमें क्या है? मिक्सचर ऑफ स्टॉक्स, ETFs, ऑल दोस थिंग्स आर देयर. सो फॉर एग्जांपल, आई एम सर्चिंग समथिंग कॉल्ड एज द एनर्जी ट्रैकर. तो एनर्जी ट्रैकर में ये सारे स्टॉक्स हैं. अलग अलग स्टॉक्स का कितना रिटर्न है, कितना वेटेज है, ये सारे चीज आप इधर देख पा रहे हो. ओके. So all those things are given. I can just start an SIP or I can simply click on invest more. So I can purchase this basket. तो इसके साथ मेरे stocks भी purchase हो जाएंगे. That is how a small case works. In small case there are some free baskets and these are some subscription based basket. फ्री बास्केट का मतलब ये होता है कि आप डायरेक्टली उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो. आपको कोई एडवाइजरी या सब्सक्रिप्शन फीस नहीं देना पड़ेगा टू द फंड मैनेजर. ओके. बट इफ यू सी, देयर आर सम प्रीमियम बास्केट्स व्हिच यू कैन ट्राई आउट. ओके, जिसमें आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड बास्केट्स भी दे सकते हो. तो आपको वो फंड मैनेजर स्टॉक्स तो बताएगा, राइट, बट दे विल आस्क फॉर सब्सक्रिप्शन. एज यू कैन सी, दीज आर द सब्सक्रिप्शन चार्जेस. ओके. अभी ये स्मॉल केस में इन्वेस्टमेंट करने का फायदा क्या है? वन थिंग इज, व्हाट आई कैन टेल यू इज, यू ऑल्सो गेट ए रीबैलेंसिंग अपडेट. जैसे कि मान लो मैंने कोई बास्केट खरीदा है, उसमें मान लो 10-12 स्टॉक्स है और 5-6 ETFs है. So my holding is around 16 to 17 total scripts, to be honest. So this baskets, these are managed by fund manager. They also give you rebalance updates. इस ऐप में ही आ जाता है और आपको मेल भी आता है from small case कि ये 15 में से 3 को बेच दो, 4 को खरीद लो, right? So these are all the rebalancing ideas that all they also give it to you. So this is how you can start your this thing, what we call it as journey with small case. देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज OFS, ऑफर फॉर सेल. तो ये सब आप देख सकते हो. FNO के लिए भी हम लोग ने एक अलग सा डैशबोर्ड बना के रखा है इधर. एज यू कैन सी, देयर इज अ सेपरेट डैशबोर्ड फॉर FNO एज वेल. सो ऑप्शन मेड सिंपल, आप इस पे क्लिक करो. वी हैव समथिंग कॉल्ड एज सेंसेक्स. इफ आई क्लिक ऑन सेंसेक्स, लेट्स assume my view for the next week is bullish. So again, it will show me the tailored made option contracts that is given here. Okay. Similarly, अगर आप देखोगे, we have something called as option chain. Now, those who are dealing into options market, we all know option chain is very important for having a better idea of the trades that you are taking. So if you click on option chain, we have come up with this unique feature. So just give me a minute. So this is how the option chain looks like.
मैं इधर से एक्सपायरीज भी चेंज कर सकता हूँ, उसके बेसिस पे ऑप्शन चेन देख सकता हूँ. सो दिस इज द एंटायर मार्केट डेटा. इट इज शोइंग मी द स्पॉट, इट इज शोइंग मी द S1 R1, राइट. साथ ही साथ मुझे अगर ग्रीक्स का डेटा चाहिए वो भी मिल जाएगा. सो इफ यू सी दीज आर ऑल द ग्रीक्स डेटा, गामा, डेल्टा, थीटा. So all these things we are providing at free of cost to our customers. Generally what happens, this kind of data people take separate subscriptions to view, but we are providing everything in one single app, that is the SBI Securities mobile application. And this mobile application is easily available in Play Store. आप इसको प्ले स्टोर में जाके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं. जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू. आई थिंक आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट, बट आई जस्ट गिव यू बेसिक ओवरव्यू. तो आप कोई भी किधर भी जाओ, you go to something called as Play Store or App Store, and from there you can download this application. Okay, तो आपको ये मिल जाएगा. Just a minute. You can search it and you will get it there. Yeah. So just search SBI Securities, and this is how it looks like. Right, so we have a rating of above 4 rating in our Play Store, and you can simply install this application from here. So it's a very simple to use application. Everything is there in one single application. आपको multiple apps download करने की जरूरत नहीं है. Greece data भी आपको इधर से मिल गया. अभी आप नीचे scroll करोगे, we also have Insta charts. Now Insta charts is a very unique feature if you are a derivative trader. If you are an option trader, if you're a derivatives trader, or if you're a trader, let's assume, and you want to start your trading journey quickly. So I think SBI Cap Securities is one of the best option because of this feature called as Insta Charts. Now I'll tell you why it is. The reason is very simple. If you click on Insta Charts, you can see the charts in one page, and you can also see the order window in the same window. एक तो आपको चार्ट दिख रहा है एक ही विंडो में, दूसरा आपको एक ऑर्डर विंडो दिख रहा है एक ही जगह पे. सो इट मेक्स योर ट्रेडिंग डिसीजन फास्टर. आपका जो ट्रेडिंग डिसीजन है वो क्या होता है, फास्टर होता है. आप चार्ट देख लो इधर से, और आपको कुछ अच्छा लगा, कोई पॉइंट आपको सही लगा, सो यू जस्ट मेक सम चेंजेस हियर and you can simply click on buy and sell button. So what we have done is we have created an Insta chart model where half of the part of the screen is your charts and the second part is your trading window. You look at the charts, place the trade below. नहीं तो क्या होता है, आप चार्ट अलग देखोगे, ट्रेडिंग विंडो जाते जाते आपका प्राइस आपको समझ में नहीं आता है. So everything is there in one screen. That is a unique feature that we all have. Then again, if you scroll down, you have the same thing, which way the index will go. Then you also have something called as most active options contract, most bought option contracts, OI losers, OI gainers. And this is not only limited to index, this is also there for stocks. ओके, आप नीचे जाओगे तो आपको एक बेसिक एनालिटिक्स भी मिल जाएगा, बिल्ट हीट मैप भी मिल जाएगा जो कि ऑप्शन ट्रेडर्स यूज करते हैं, राइट. सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर. देन वी आल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज ए म्यूचुअल फंड्स डैशबोर्ड. म्यूचुअल फंड्स का एक ओवरव्यू आपको दिया ही है मैंने इन्वेस्टमेंट बास्केट जब मैं आप लोग को बता रहा था, बट वी हैव ए सेपरेट डैशबोर्ड विद इन द एप्लीकेशन विच इज कॉल्ड एज द म्यूचुअल फंड्स डैशबोर्ड. Now if you see something called as top performing schemes last 3 years, based on the last 3 years CAGR, so these are the top performing schemes, right. आप नीचे जाओगे तो और भी स्कीम्स आपको दिख जाएगा बेस्ड ऑन द कैटेगरीज. आपको जो कैटेगरीज चाहिए उसके बेसिस पे, लॉन्ग ड्यूरेशन, प्रॉमिसिंग, शॉर्ट ड्यूरेशन, राइट, ऑल दोस थिंग्स आर देयर. सो मैंने अगर प्रॉमिसिंग पिक्स पे क्लिक किया, यू हैव समथिंग कॉल्ड एज एक्सिस स्मॉल कैप फंड. इफ यू क्लिक ऑन दिस, यू गेट ए डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट एक्सिस स्मॉल कैप फंड. तो एक तो सबसे पहले आपको एक रिस्कोमीटर दिया रहता है. Those who are investing in mutual funds, those who know about mutual funds, as per the AMFI guidelines, we have to provide the riskometers. तो riskometer भी बाजू में दिया रहता है. एंड जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इट विल शो मी द डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फंड्स कि एक साल में इसका रिटर्न कैसा है, 5 साल में कैसा है, एसेट एलोकेशन कैसा है, व्हाट इज द क्रिसिल रेटिंग. CRISIL care are the credit rating agencies in India. So what is the CRISIL rating of that particular mutual funds? What is the asset allocation in that particular mutual funds? कितना कितने एसेट हॉस्पिटलाइजेशन सेक्टर में, कितने एसेट्स, कितना एक्सपोजर आपका नेट करंट एसेट्स पे है, कौन से कंपनीज पे इन्वेस्टमेंट्स किया है,
Everything is given in this particular section. Now, if you scroll down, you also have a very basic calculator, राइट. देन यू ऑल्सो द फंड इन्फॉर्मेशन. नॉर्मली क्या होता है कि लोग म्यूचुअल फंड तो खरीद लेते हैं, बट ये सब इंफॉर्मेशन जानने के लिए आई हैव सीन पीपल पीपल गो टू एएमसी's वेबसाइट. अरे इसका फंड मैनेजर क्या है, एएमसी की वेबसाइट में जाके ढूंढो. With SBI Cap Securities app, you only need one application. You don't need to go here and there. You simply scroll, you will get the fund information. Who is the fund manager? Who is the AMC? Everything. ओके. बेंचमार्क क्या है वो भी आपको इधर दिख जाता है. एंड यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट्स. दो बटन दिया गया है. यू कैन इन्वेस्ट वन टाइम और यू कैन स्टार्ट योर एसआईपी. सिमिलरली आप एफएनओ भी कर सकते हो. एफएनओ में कुछ ट्रेड वगैरह करना है वो भी आप कर सकते हो, राइट. यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द बाय बटन. यू कैन स्टार्ट योर ट्रेड्स इफ यू वांट. सो फॉर एग्जांपल इफ आई एम क्लिकिंग ऑन दिस, इफ आई क्लिक ऑन बाय, मैं अपना ट्रेड स्टार्ट कर सकता हूँ. मैंने ट्रेडिंग विंडो तो ऑलरेडी आपको बता दिया है, हाउ टू डू बाइंग एंड सेलिंग. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इज, ये सब तो ठीक है बट बाइंग सेलिंग के लिए मुझे फंड्स डालने हैं. तो मैं इस पे फंड्स कैसे डालूं? हाउ शुड आई पुट फंड्स इन दिस? तो इट्स वेरी सिंपल गाइज. आई टेल यू हाउ इट कैन बी डन. So if you see on the top left hand corner, you will see this menu option. If you click on that menu option, you will see something called as available funds. Okay, I can withdraw it or I can add the funds. So if I click on the add fund section, तो इधर मैं अमाउंट डाल सकता हूँ. सो जिसका 3-in-1 अकाउंट है एसबीआई कैप सिक्योरिटीज में, जैसे कि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग्स अकाउंट प्लस एसबीआई कैप सिक्योरिटीज का डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट लिंक्ड है, दैट इज कॉल्ड एज अ 3-in-1 अकाउंट. तो आपके लिए तो फंड ट्रांसफर इज वेरी सिंपल. इट्स लाइक वेनिला. आई टेल यू हाउ इट इज. सो यू विल गेट टू बटन्स, होल्ड एंड रिलीज. होल्ड किया तो आपके एसबीआई के सेविंग्स अकाउंट से डायरेक्टली फंड्स इधर आ जाएंगे विदाउट यूजिंग एनी यूपीआई और एनीथिंग. इट इज वेरी सिंपल. रिलीज किया तो उधर चले जाएंगे. यू डो नॉट नीड एन इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड, यू डू नॉट नीड ए यूपीआई आईडी और एनीथिंग, राइट. तो आप वो भी कर सकते हो. जिसका 2-in-1 अकाउंट है, इन दिस केस आई एम शोइंग यू 2-in-1 सिनेरियो कि माय एचडीएफसी बैंक इज लिंक्ड. ओके, तो इधर मैं क्या करूंगा, आई विल पुट सम अमाउंट. सो फॉर एग्जांपल 100 डाल दिया मैंने और इधर मैंने यूपीआई सिलेक्ट करके रख दिया. तो यूपीआई में आई जस्ट पुट माय यूपीआई आईडी. मैंने सिर्फ अपना यूपीआई आईडी डाल दिया. And what will do is it will give the request to my UPI application. So it's very simple. So I'm just accepting the UPI mandate which I have received from SBI Cap Securities. That's it. Yeah. So I'll just show you how this fund feature works. Right. So either it is giving me the waiting time. So till that time, what I'm going to do is I'm going to transfer the funds. So मैं registered bank ID से इसको transfer कर रहा हूँ. So as you can see, I have just made this payment from the UPI, and now what I'm going to do is it is going to get refreshed in some time. ये देखो automatically refresh हो रहा है and see I have added 100 rupees more. ठीक है. If I want to see the transfer history, I can select the transfer history from here, and this is all the fund transfer history. So अभी आज का डेट है, ये 100 रुपया ट्रांसफर किया है. सो इट्स वेरी सिंपल, राइट. कुछ नहीं है, आप फंड ट्रांसफर करके आप अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो. यू कैन गो थ्रू द रिसर्च आइडियाज एंड यू कैन स्टार्ट योर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग जर्नी विद एसबीआई कैप सिक्योरिटीज. ठीक है. तो उसके साथ साथ और भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ. देयर आर सम अदर फीचर्स इन दिस एप्लीकेशन. सो एक तो आप रिसर्च आइडियाज वगैरह तो देख ही सकते हो. आइडियाज पे गए, अभी मैंने रिसेंटली थोड़े फंड ट्रांसफर किया है तो मैं 500-300 का स्टॉक ले सकता हूँ. सो आई कैन बाय दिस. सो इन द सिमिलर मैनर आई वुड सजेस्ट यू द फंड ट्रांसफर. यू हैव सीन द प्रोसेस. इट्स वेरी इजी. आई डिड इट लाइव इन फ्रंट ऑफ यू, राइट. तो आप फटाफट अपना फंड ट्रांसफर करके आप रिसर्च आइडियाज में जाके भी अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो. फॉलो द रिसर्च आइडियाज विच इज गिवन हियर. ओके. उसके अलावा और भी चीजें मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ. सो वी डिस्कस्ड अबाउट म्यूचुअल फंड्स, वी डिस्कस्ड अबाउट ईटीएफ्स, राइट. वी कैन शो समथिंग एल्स. जैसे कि बहुत लोगों को ना एक स्टॉक के बारे में एनालिसिस करना पसंद है. रिसर्च आइडियाज तो ठीक है, विल गेट द रिसर्च रिपोर्ट्स, बट एक बेसिक एनालिसिस ऑफ ए पर्टिकुलर स्टॉक, हाउ विल यू डू इट? इट्स वेरी सिंपल. You search the contract. So for example, I'm searching something called as TCS. I'm just taking TCS, then I'm clicking on any stock. So NSE का एक आ जाएगा, एक BSE का आ जाएगा. I'm selecting this. So I can get an overview of that particular stock. Okay. मुझे क्या मिल जाएगा? एक ओवरव्यू मिल जाएगा, राइट.
and that is something called as the market depth. Then if I scroll down, I will get something called as open, high, low, close. Then I have signals. Now again, this is a very unique feature of our application where we provide a 360-degree analysis. Now we also provide SWOT analysis. Now what I call SWOT is nothing but strength, weakness, opportunities, and threats of that particular company. So if I click on that, what are the strengths, what are the weakness, what are the opportunities, what are the threats, ये सारे चीज आपको एक जगह पे दिख जाता है. लोग इसके लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेते हैं. आई रिमेंबर दैट few years back when I didn't have this application, I used to take subscription for other providers for giving this data. But for our SBI Cap Securities clients, it is available at free of cost in this single app. You do not need to go for some other subscriptions or something. Then again, if you scroll, if you click on this, you get the returns and volume data, you get the financials data, you get the technicals data, you get the shareholding pattern. So technicals, maybe if you see how beautiful it is, they have created screeners on technical analysis. तो exponential moving average, simple moving average में कैसे चल रहा है चीजें, right? What are the pivot levels? So those who actually take decision based on charts, right? So I have been working with charts. I can tell you pivot levels is very important. So pivot levels आपको दिख जाता है इधर. तो सारी चीज आपको एक ही जगह पे दिख रहा है. दैट्स द यूनिकनेस ऑफ दिस एप्लीकेशन. देन द शेयर होल्डिंग पैटर्न इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक, द बल्क डील्स और द ब्लॉक डील्स दैट वी हैव, द न्यूज एंड इवेंट्स दैट वी हैव इट हियर. सो एवरीथिंग इज गिवन हियर. ठीक है, तो ये सारे चीज आपको इधर ही दिख जाएगा. ऑलराइट, so you can just go through any stocks and you can do the needful. Charts bhi diya gaya. If you click on view chart, we have two charting platforms in our mobile app. We have something called as our trading view, that is one thing, and we have some other charting platform provider. तो मैं दोनों इसमें ये कर सकता हूँ, enable disable कर सकता हूँ. So I can simply go to settings from here, menu option, right? And जैसे मैं इधर जाऊंगा, on the top right hand corner you can see the settings. So we have chart IQ, we have trading view. So I think we are one of those very few stock broking houses out there, those who have multiple charting platform. एक नहीं है, दो है. अगर आपको बेसिक चार्टिंग करना है तो आप चार्ट IQ यूज करो. अगर आपको थोड़ा बहुत एनहांस चाहिए, यू यूज ट्रेडिंग व्यू, right? So we have two charting platforms in our mobile application. So that is what we have us with here. Okay, then you have something called as orders and position book. तो ये थोड़ा बहुत मैं आपको बताए तो इसका मतलब क्या होता है, right? So if you're placing a trade, अगर आपका ट्रेड मैच नहीं होता है और एग्जीक्यूट नहीं होता है, till the times it is getting executed, it will be there in the order book. Once the trade gets executed, it will go to trade book. जैसे ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, आपके ट्रेड बुक में चला जाएगा. आज जो आपने पोजीशंस खड़ा करके रखा है, वट एवर द पोजीशंस दैट यू हैव टेकन, दैट यू विल गेट इन द टुडेस पोजीशन सेक्शन. अगर आपने डेरिवेटिव पोजीशंस खड़ा करके रखा है, सो आई गिव एन एग्जांपल. इफ यू हैव टेकन ए फ्यूचर्स ट्रेड, तो फ्यूचर्स में लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं 10 days 15 days डिपेंडिंग अपॉन देयर व्यू वेदर दे आर बुलिश और बियरिश. तो आई कैन ऑल्सो सी माई कैरी फॉरवर्ड पोजिशंस हियर. तो ट्रेड किया, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो ऑर्डर बुक में रहेगा एज ए पैसिव ऑर्डर. Once that trade gets executed, it becomes an active order. It will go to the trade book. And जो आज के positions है वो आपको सब कहाँ पे मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा today's positions पे. So this is as simple as that. Okay, so that is what we see here. Then you also have portfolio. Portfolio is nothing but what मैं जो नीचे के फुटर के बटन्स है ना वो क्लिक कर रहा हूँ. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. सो आपका पोर्टफोलियो वैल्यू दिखेगा. सो दिस इज माय पोर्टफोलियो वैल्यू. This is the holdings in equity, this is the holdings in NPS. Then we also have a feature called as a watch list, very important feature for traders or investors. So if I'm a trader or investor, if I have some favorite stocks which I want to view it on a regular basis, I can create a watch list. So by default Nifty 50 watch list is there. उसके अलावा मैं और 5 वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ. देखो हमारे यहाँ आप मैक्सिमम 5 वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो. एक वॉच लिस्ट में मैक्सिमम कैपेसिटी हो सकता है ऑफ 50 स्टॉक्स. सो फॉर एग्जांपल मैं पेंसिल आइकन पे क्लिक करूंगा. आई जस्ट skip all this and I have created something called as, so I'll just change the name of the watch list. Let's take something called as automobiles. ठीक है, and again add symbol. So for example I'm adding something called as TVS.
तो ये मैं प्लस बटन पे क्लिक किया सर्च करके। दूसरा मैं स्टॉक ले लेता हूँ, लेट्स अज्यूम आई एम टेकिंग समथिंग कॉल्ड एज बजाज, बजाज ऑटो। आई वांट द स्टॉक फ्रॉम बीएसई, सो आई क्लिक ऑन दिस प्लस बटन। देखो, बजाज ऑटो के बाजू में तीन बटन दिए गए हैं, एक है प्लस, एक है होता है बी, बी मतलब बाई बटन ओपन हो जाएगा, सेल मतलब एस मतलब सेल बटन ओपन हो जाएगा। सो आई हैव क्लिक ऑन द प्लस बटन सो दैट इट गेट्स एडेड इनटू द वॉच लिस्ट। सो इफ आई क्लिक ऑन दिस बैक बटन, तो ये आपका दो स्टॉक्स ऐड हो गए। सो सिमिलरली आई कैन क्रिएट ए वॉच लिस्ट, आई कैन चेंज द नेम ऑफ दैट वॉच लिस्ट, आई कैन ऐड स्टॉक्स, आई कैन रिमूव द स्टॉक्स एज वेल। तो मैं पेंसिल आइकन पे क्लिक करूं तो आप देखोगे बजाज ऑटो टीवीएस के बाजू में क्रॉस बटन आ गया है। सो इफ आई क्लिक ऑन दोस क्रॉस बटन, व्हाट विल हैपन इज वो मैं ये स्टॉक्स को रिमूव कर सकता हूँ इस वॉच लिस्ट में। सो लॉट ऑफ फीचर्स, आई थिंक इट इज डिफिकल्ट टू कवर एवरीथिंग इन वन थिंग, बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट फीचर्स दैट वी हैव हियर। अभी जैसे कि बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि सर मुझे अलर्ट सेट करना है। अलर्ट्स का मतलब ये होता है कि अगर ये शेयर प्राइस इस लेवल तक गया तो मुझे नोटिफिकेशन आना चाहिए। सो वी ऑल्सो हैव ए प्राइस अलर्ट सेक्शन, which is a very important thing for traders. So I know I have been trading, or I have been in the markets for the past 6 to 7 years. I can tell you. So if you just click on this notifications, you can get those notification section. अभी मान लो कोई स्पेसिफिक स्टॉक पे मुझे अलर्ट क्रिएट करना है, वो कैसे करूँ? तो आप लोग का कोई स्टॉक है, यू कैन टेल मी, somebody is telling me about something called as Asian Paints. So I'll just take Asian Paints. तो Asian Paints अगर मैंने ले लिया, I can simply click on that, and once I click on Asian Paints, on the top right hand corner you will see a bell icon. Okay, तो ये बेल आइकन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, यू कैन सी एलटीपी, डेज चेंज, लो, हाई, वॉल्यूम, एवरीथिंग. So the based on price, if I'm saying that Asian Paints is currently trading at 2,366 rupees, 0.20 paise. I want a trigger or a notification or an information if the price goes above 2,370.10. So if I click on save, this alerts get created. Once this alert gets created, it shows all the active alerts, and on the next button it will show all the triggered alerts. कितने बजे ट्रिगर हुआ है और कौन से डेट पे ट्रिगर हुआ है, सब कुछ आपको एक जगह पे मिल जाता है. ओके, नाउ अगर आप इसको बैक बटन पे क्लिक करते हो तो आप भूल जाओगे कि अरे अलर्ट सेक्शन चला गया, कहाँ पे मिलेगा अलर्ट सेक्शन. सो अगेन इट्स वेरी सिंपल, you go to this menu option, and here you go to the settings tab on the top right hand corner. So if you go to the settings tab, you have something called as manage alerts. So if you click on manage alerts, you can change your alerts, you can edit your alerts. If you see the pencil icon, you can click on it and edit it. मान लो मुझे थोड़ा प्राइस चेंज करना है, तो I can do it and click on the save button. I can also delete that alerts. So lot of features are there. Okay, अभी बहुत लोग मुझे queries भी पूछ रहे हैं. We'll try to answer your queries as much as possible, right? So I think the team can share the some query details or email IDs if they want to. Or else you can also raise your queries here. So if you see, there is something called as a chatbot that we have on the top corner, Thea. So you can chat, you can do a live chat. All those things are available here. So ये सारे चीज आपको एक ही जगह पे मिल जाता है. यू कैन ऑल्सो विड्रॉ योर फंड्स. मैं विड्रॉ पे क्लिक करूँ, आई वॉन्ट टू विड्रॉ 1000 and I can withdraw your funds. So withdrawal order request has been placed, and after some time your funds will get withdrawn. तो बहुत सारी चीजें आपको एक जगह पे दिख जाता है. देन यू ऑल्सो हैव हेल्प एंड सपोर्ट, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, राइट? ऑल दोज फीचर्स आर ऑल्सो देयर हियर. So this is all about the mobile trading platform of SBI Cap Securities. I'll quickly give a summary to each and every one of you what we discussed today. We discussed some very important features, that is your buying and selling window, the dashboard. When I talk about dashboard, we saw the overall explore section, we saw the stock specific dashboard, we saw the derivatives dashboard, right? All those things are there. So I got one question from Mr. Shibani Shankar Sahu. What is the difference between release and withdraw? So Shibani, I'll tell you, release and hold, these are the features which are available in your 3-in-1 account. कि अगर आपका 3-in-1 अकाउंट है तो आपको दो चीज मिलता है. 3-in-1 का मतलब होता है जब आपका एसबीआई का सेविंग्स अकाउंट लिंक्ड है, तो आप रिलीज कर दोगे तो क्या होगा, आपके इधर से फंड रिलीज होके एसबीआई बैंक अकाउंट में आ जाएगा, राइट?
If I'm having a two in one account, that in case of this, my HDFC बैंक account is linked here. ओके, तो इस केसेस में मुझे विड्रॉ का ऑप्शन भी दिख जाता है, आप लोग को भी दिख जाएगा, आई थिंक वो उनको भी दिखता है. सो बोथ आर वन एंड द सेम, द वे द जर्नी इज डिफरेंट, दैट्स द ओनली डिफरेंस दैट वी हैव. ठीक है, मूविंग ऑनवर्ड्स टू आवर समरी. तो वी डिस्कस्ड अबाउट डैशबोर्ड्स, वी सॉ द एंटायर डैशबोर्ड, वी क्रिएटेड वॉच लिस्ट, we also saw the trading window, we also saw the 360-degree analysis, SWOT analysis, technical indicators or technical screeners. We also saw the research ideas that we have us with here. We also saw the mutual fund section, the ETF section, the insta charts, the option made simple. So we actually discussed about the funds पेइन एंड पे आउट, अगर मुझे फंड्स डालना है, निकालना है, अलर्ट्स क्रिएट करना है, चार्ट्स देखना है, ये सब कैसे देखें. So all those things is something that we have discussed today, right? So that's it for today. I think you all have a wonderful day ahead and happy trading and happy investing.